Hello students, how are you all? Welcome to our Be EduCARE MBA channel. So in today's topic, we are going to discuss about Maharashtra MBA CET 2026 paper pattern. Okay, chalo, let's start what we have. So in the sections, friends, we have logical reasoning encompassing 75 question with 75 marks, 1 mark for each question. Abstract reasoning, also called as visual reasoning, 25 questions for 25 marks. Verbal ability and reading comprehension, 50 questions, 50 marks. Quantitative aptitude and DI, उनका भी 50 क्वेश्चंस टोटल में आएगा encompassing 50 मार्क्स. सो ये दोनों मिला के देर आर 50 क्वेश्चंस. ओके, सो टोटल वी हैव 200 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स. कितने टाइम मिलेंगे आपको? 150 मिनट्स टोटल टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस with no negative marking, friends. If you come under PWD category, you will get 200 minutes. Mode of examination online. Okay, so this is with respect to sections under MBA CET. Now let's move forward and let's see in each sections what we have. So first section, quantitative aptitude and data interpretation में क्या क्या subsections होंगे? Let's check. First would be arithmetic, encompassing 8 to 12 questions. What all topics can be covered in arithmetic? Percentage, PNL, averages, SICI, ratio, proportion, variation, mixtures and alligation, friends, time, speed, distance, time and work. Next subsection is algebra. उसका questions कितने आ सकते हैं friends? 5 to 8. Algebra में you can expect questions from linear equation, quadratic equations, progressions in the form of arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression. Another subsection, what we have is geometry and mensuration. You can expect 2 to 4 questions from geometry and mensuration. What all topics it can cover? Lines and angles, area and perimeter of 2D and 3D figures, friends. So generally mensuration में से एक दो question तो आता ही आता है. So get prepared well in mensuration topic as well. Next subsection, friends, is number system. Total number of questions asked would be 6 to 10. And the topics which can get covered in number system, friends, would be number series, HCF, LCM, sorts and indices, unit digit, remainder theorem. This all concepts and topics can be covered under number system. So a good weightage is there under this subsection as well. Okay. Now modern maths, friends. So modern maths में 3 से 6 questions आप expect कर सकते हो. And the topics you have to be well versed would be permutation and combination, probability, statistics, set theory. Okay. And last but not the least, very important subsection, which is, friends, data interpretation. So उसमें क्या क्या आप topics cover करोगे? Pie charts, line and bar graph, tables, caselets, mixed graph. It is nothing but, friends, just you have to read the chart and arithmetic के concepts आपको apply करने हैं. Okay, to get clear with DI. So and hence preparation of arithmetic becomes very important, friends. Okay, so this is with respect to the section quantitative aptitude and data interpretation. Okay, now let's move on to the logical reasoning का paper pattern. So first we will see traditional logic के topics. ट्रेडिशनल लॉजिक में क्या क्या आ सकता है, फ्रेंड्स? कोडिंग डिकोडिंग के 5 to 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिलोजिज्म 4 to 5 क्वेश्चंस. डायरेक्शन सेंस 3 to 4 क्वेश्चंस. ब्लड रिलेशन 2 to 3 क्वेश्चंस. नंबर सीरीज 1 to 2 क्वेश्चंस. लेटर सीरीज 1 to 2 क्वेश्चंस, फ्रेंड्स. टोटल जो ट्रेडिशनल लॉजिक में से आ सकता है, फ्रेंड्स, वुड बी 20 to 25 questions. Okay, so preparation of traditional logic becomes important as it has a important weightage of 20 to 25 questions, and in addition iska preparation is comparatively very simpler. Okay, so let's move on to the next part. What all modern logic topics we have? We have alphabet test, ranking numberings, logical inequalities, coded operations, missing number, odd man out, Venn diagram, decision making, input output, cube based questions, set theory, caselet based questions. So all the chapters can come for around 1 to 2 marks, as in you will get 1 to 2 questions from each topic.
And input, output and set theory में you can expect 3 questions till the maximum level of 3 question. And caselet based question आया तो 3 to 5 questions भी आ सकते हैं. Okay. So now this is with respect to friends modern logic topics. Now what all other things we have in LR, let's look at it. Critical reasoning topics friends. Statement and conclusion 1 to 2 questions. Statement and assumption 1 to 2 questions. Statement and arguments 1 to 3 questions. As per me, this is an important topic, friends. Cause and effects again an important topic, encompassing 1 to 3 questions. Course of action आ सकता है and inference आ सकता है. Inference generally आपको एक बड़ा सा पैरा दिया जाएगा and you have to infer the whole para in a right option. ओके सो ये आपका आ सकता है फ्रेंड्स फॉर अराउंड टोटल 8 to 10 questions. सो अगेन क्रिटिकल रीजनिंग a simpler subsection to be prepared. तो आपको easily you can score 8 to 10 marks, friends. Now, what we have in the next subsections: arrangement based topics, linear arrangement 4 to 8 question. अभी 2 सेट आ सकता है, 1 से 2 सेट. सो आई एम इंक्लूडिंग जो फ्लोर बेस्ड रहता है दैट ऑल्सो आई एम इंक्लूडिंग इन लीनियर अरेंजमेंट फ्रेंड्स. जो रैंकिंग्स एंड ऑर्डरिंग्स के जो अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट आ सकते हैं दैट ऑल्सो आई एम इंक्लूडिंग इन फ्रेंड्स linear arrangement. So total you can expect 4 to 8 questions in linear arrangement. Circular arrangement again 4 to 8 question. 2 पैरामीटर के आ सकते हैं, 3 पैरामीटर के आ सकते हैं और 4 पैरामीटर बहुत ही रेयर होगा बट वी कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी. ओके. रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर अरेंजमेंट 0 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर अरेंजमेंट होते हैं उसके अलावा भी कार पार्किंग के सम्स आ सकते हैं कि 4 गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई है, 4 गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई है. लाइक some variation they can show, correct? So that also I am including in rectangular and square arrangement. Complex arrangement, friends, again like circular arrangement 4 to 8 questions and it can compass 2, 3 and 4 parameters. The chances of 4 parameters is also as equal as chances of 3 parameters, friends. So I'm not denying the chances in कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट. सर्कुलर अरेंजमेंट में जनरली 3 पैरामीटर से ज्यादा नहीं जनरली आपको दिखने मिलेगा बट कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में देर इज हाई पॉसिबिलिटी 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर और 4 पैरामीटर आपको देखने मिल जाए. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स फ्रेंड्स. ओके. उसके भी यू कैन इंक्लूड अंडर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट जो जनरली हम लोग को कैट में दिखने मिलते हैं. सो व्हाट इज द टोटल बेस ऑफ अरेंजमेंट? टोटल वेटेज इज 18 to 22 क्वेश्चन. सो दिस फॉर्म्स अराउंड ग्रैंड टोटल ऑफ LR 75 questions including critical reasoning, arrangement, modern logic topics, traditional logic topics. Okay, friends, so this is with respect to logical reasoning. Now let's move on to abstract reasoning or we can say visual reasoning. तो उसमें कौन कौन से टाइप्स के सम्स आपको देखने ज्यादा मिलेंगे इन द पेपर? सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल सकते हैं, 6 to 8 क्वेश्चंस वो देखने मिल सकते हैं. यानी कि 4 डायग्राम दिए रहेंगे आपको एंड यू हैव टू फिगर आउट द फोर्थ डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम जो है वो क्या होगा. सो दैट कैन कम अंडर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन. नाउ एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन 2 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं. 2 डायग्राम में एक आपको रिलेशन बताया जाएगा एंड देन यू हैव टू फिगर आउट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ओके. तो पहले ये रिलेशन आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गो अहेड विद द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो एनालॉजी बेस्ड 2 to 5 क्वेश्चन, ऑड मैन आउट बेस्ड 3 to 6 क्वेश्चन, मिरर एंड रिफ्लेक्शन बेस्ड 2 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स. Cube based logic 1 to 2 questions, other types 0 to 5 questions. So total जो इसका बन के आएगा फ्रेंड्स that would be 25 question. So इसमें भी जो जो important जो जो सब topics है that you can prepare very well. Okay. So this is with respect to abstract reasoning which holds a very important part in your syllabus of 25 marks. Okay. Now let's move on to VARC, what we have in verbal ability and reading comprehension. So part 1 में देखेंगे reading comprehension में क्या क्या है अपने पास. 14 to 18 questions आएंगे, या तो 3 RCs आ सकता है या तो 4 RCs आ सकता है, each of 4 to 5 questions.
Sentence and para completion 0 to 3 questions. पैरा जंबल्स इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे पैरा जंबल्स में से फ्रेंड्स. ऑड मैन आउट 3 to 5 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. एंड अनदर पार्ट ऑफ जनरली इसमें वो कैप कवर होगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सी 8 to 10 क्वेश्चन सिर्फ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के आएंगे फ्रेंड्स. सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन 5 क्वेश्चंस. idioms simple 2 to 3 questions. fill in the blanks 2 questions. vocabulary अदर में आपको शायद होमोसोनिक साउंड्स या कंगारू वर्ड्स या होमोसोनिक वर्ड्स ऐसा कुछ पूछा जाए. सो vocabulary अदर कैटेगरी में कुछ भी बाहर से कुछ भी अलग एक पूछा जाए कैटेगरी से. सो दैट कैन बी अराउंड 2 to 3 questions. एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 4 questions फ्रेंड्स. सो टोटल VARC का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 50 क्वेश्चंस. ओके, फेयर इनफ. नाउ this is the right time to start with your MBA CET preparation. So if you're wondering which is the best institute, you can always contact us at this number and get the details about how to prepare all the subtopics, all the subsections of the main sections of MBA CET. So this is it with MBA CET paper pattern. So I wish you all a very good luck.